Hello everyone, INI set is finally over. I hope we did the best we could do and I hope we learned from our mistakes. Exams तो आगे भी बहुत ज़्यादा आएंगे. If we learn from our previous mistakes, we'll be able to build upon those mistakes to improve our performance further in the future exams. What matters is performing best we can do in the exam right now and leaving the rest of the things for the future and learning from our mistakes that we did in the exam. ठीक है. Good morning everyone, my name is Dr. Aditya Melthi. I got an all India rank of 150 this year in NEET PG and I wanted to make this video on the FSM 15. So as funny as it sounds, these are 15 subjects along with the important topics in those 15 subjects which are actually extremely important for a final exam. And even from these 15 subjects, there are a few subjects without giving proper attention to which we cannot get even a decent rank in exam, leave alone a top rank, leave alone a top rank. Getting even a decent rank is very difficult if you leave a few subjects. Before jumping into the video, I'd like to tell you a thing that important topics जानने का important topics होने का मतलब ये नहीं होता कि we start revising, we start reading those important topics from the first read onwards. From first read or first or second revision पे we do not have any flow of the topic, we do not have any flow of the subject. अगर मैं गायनी पढ़ रहा हूँ तो it is important for me to know कि normal labor कैसे proceed होता है, complications of labor क्या होती हैं, उनको treat कैसे किया जाता है. अगर मैं सीधा ही कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लेबर से अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा, आई नेवर गेट अ क्लियर व्यू ऑफ द टॉप ऑफ द सब्जेक्ट. आई नेवर गेट अ क्लियर मेंटल मैप ऑफ द सब्जेक्ट. दैट मेंटल मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गो फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेट व्हेन यू रीडिंग फर्स्ट टाइम or when you're revising first or second time. It would only make your situation more difficult, more haphazard, and you'll suffer from more FOMO. Important topics आपके लास्ट के टाइम के लिए होते हैं when you're revising just before exam, so you can go topic wise. जिन टॉपिक को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है उनको ज्यादा ध्यान दे सको. फॉर अब जैसे एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, नो टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो टॉपिक इज कंप्लीटली यूजलेस. कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से इंटीग्रेट होकर क्वेश्चन पेपर बन रहा है. दैट इज व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू फोकस ऑन एवरीथिंग दैट इज गिवन इन द रिवीजन वीडियोस. Go through the revision videos, properly revise those revision videos once or twice. Once you get the proper flow of subject, then go to important topics. Thank you, and let's jump into the video. What are those few subjects? Those few subjects are surgery of 4th year, OBGYN of 4th year, biochemistry, pathology, microbiology, and pharmacology. So these 6 subjects actually make the basics of our NEET PG. These actually make the basics of our INI set. These are important because these are important in themselves also, but these are also important because these link the entire medical field together. Pharmacology links physiology and pathology with medicine. That is why pharmacology is very important. So as we'll move ahead in the video, we'll see what are the important topics of these subjects and how we can approach these topics. So without wasting any further times, we'll start from the 4th year subject first. So starting from pediatrics. Now pediatrics in itself is not such a mega important topic because more or less of pediatrics is covered in medicine, or more or less of pediatrics is very well integrated with other subjects like physiology and pathology. But still something which you'll not study in other subject is general pediatrics and neonatology. These two topics, general pediatrics and neonatology, are very important because इनको पढ़ने के लिए you have to refer to the books of pediatrics, you have to refer to the resource of pediatrics. So I would suggest that you go for revision resource of pediatrics, and for these two specific topics, supplement this revision resource with QBank. And obviously you have to do this QBank after you have properly completed your PYQs. Once you do your PYQs, you can then move ahead to QBank to increase your knowledge base for these two topics. For rest everything, revision resource of pediatrics would suffice. The next make or break subject is surgery. I like to label it as a make or break subject because this is very important subject. Approximately 25 questions come from surgery, and surgery recently is becoming quite unpredictable. When I was preparing for my NEET PG, it was said that trauma is extremely important and general surgery is extremely important. But as the time is passing by and as the exams are happening, it's धीरे धीरे क्या हो रहा है कि GIT से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं. GIT is gaining more importance. GIT is slowly increasing its question base. So that makes GIT one of the most important topics in surgery. And even if you look in GIT, upper GIT, that is still intestines, esophagus, stomach, if I have to write it down, that means esophagus, stomach, upper GI bleed,
All of these topics are very important, which is followed by hepatobiliary. आयनाइसाइट नवंबर पिछली बार क्या हुआ था कि हेपाटोबिलियरी का पार्ट बहुत ज्यादा था एंड आई वाज कंपैरेटिवली वीक इन हेपाटोबिलियरी, जिसकी वजह से मेरे हेपाटोबिलियरी के सारे क्वेश्चंस गलत हो गए थे. तो हेपाटोबिलियरी स्लोली ग्रोइंग मोर इन इंपॉर्टेंस, व्हिच इज फॉलोड बाय लोअर जीआईटी, colorectal cancers, colonic problems, etc. These come later on. Upper GIT followed by hepatobiliary followed by lower GIT. Then obviously general surgery is very important, trauma is very important, burns is very important, breast and thyroid. Now this thyroid is way more important than salivary glands. You cannot go in exam leaving thyroid, but you can go in exam if you have left salivary glands. Vascular surgery slowly become more and more important. Vascular surgery mein veins, varicose veins are more important than arterial problems, and which is more important than lymphatics. Hernia is important, and urology comes at last, because urology is comparatively a unit which takes up more of our time. So we'll see urology at the end of surgery, because cumulatively जो questions है वो urology से कम आ रहे हैं as compared to other subjects. So for surgery I'll suggest you go for RR videos. आई पर्सनली डिड सर्जरी फ्रॉम मेन वीडियोस, बट क्योंकि अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है और सर्जरी की मेन वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ा रिसोर्स है, सो आई पर्सनली रिकमेंड कि आर वीडियोस ऑफ सर्जरी, सप्लीमेंट इट बाय PYQs, एंड फॉर दीज स्पेसिफिक टॉपिक्स GIT, जनरल सर्जरी, trauma, breast, burns, for these you can also refer to QBank. For these specific topics you can add upon by using QBank, and for rest all the topics of surgery, revision resource and PYQs should suffice. But for these topics you can add on QBank. Or I'd like to add upon one more thing, कि if you're facing problem in any of these topics, for example इनमें से कोई topic आपको समझ नहीं आ रहा, या you are little weak in the concepts of these topics, I'll also suggest that you add upon your knowledge from the main videos specifically of these topics, because these would be the make or break topics in surgery. Then comes obs and gynae, another make or break subject in NEET PG. Obs and gynae is very important because it is also contributing approximately 20 to 25 questions in NEET PG. Obs is slightly more important than gynae, but more or less their contribution in the exam is equal. Now it is important to realize कि obs and gynae में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, we follow a proper sequence. Now this following a proper sequence is important for initial reads and first two revisions, क्योंकि it helps you to make a mind map of the subject. But later on, when you're revising finally for obs and gynae, you have to pay attention to from where the questions are asked. Questions in obs is generally asked from complications. For example, complications of pregnancy is very important. PIH, GDM, early bleeding, late bleeding, RH isoimmunization. Okay, in that order, these topics are very important in complications of pregnancy. Second, complication of labor is far more important than normal labor. सो एंड में क्या होता है कि हम नॉर्मल लेबर के टाइमिंग्स याद करते रहते हैं कि व्हाट इज द एडिक्वेट टाइम फॉर फर्स्ट स्टेज, लेटेंट स्टेज, एक्टिव स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर. बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लेबर लाइक PPH and AMTSL go hand in hand, or instrumental delivery. Out of this, PPH is actually very important. Third is normal labor. नॉर्मल लेबर से जो हम क्या करते हैं कि वी गो ऑन मेमोराइजिंग द टाइमिंग्स, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस. नॉर्मल लेबर से कभी कभी वो पेल्विस की या कभी कभी वो स्कल की इमेज देके हमसे डायमीटर्स पूछ लेते हैं, ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, ये सब बताओ, या फिर फीटल स्कल देके डायमीटर्स पूछ सकते हैं. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू इमेज बेस्ड क्वेश्चंस. नाउ सेकंड इज गायनेकोलॉजी. नाउ गायनेकोलॉजी में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस IBQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के IBQs इस बार के नीट PG में आए थे, स्पेसिफिकली राउंड 2. फॉर एग्जाम्पल एंडोमेट्रियोसिस का IBQ था, फाइब्रॉइड का IBQ था. So image-based questions are actually very important in gynecology. And while reading gynecology, you also initially you will read in a particular sequence to understand the subject, to make a mind map of the subject, and to get the flow of a subject. But after some time, while revising, third time revision or fourth time revision, or just before the exam, you need to revise in a proper way. Jaki important subjects you revise when your mind is fresh. That is in the early morning or just after you have sat studying. I want you to revise those subjects which are actually very important for the exam, or jinse short questions aane. Now these are the topics in gynecology which are actually very important. Infections are very important. Infertility is very important. Isme PID is actually very important, followed by vaginitis, followed by kits which are used.
Infertility is very important. PCOS and endometriosis comes after this, and cancers for gynecology come at last if you're talking about NEET PG. If you're talking about INI set, cancers are actually very important. But if you're talking about NEET PG, because INI set has just went, if you're talking about NEET PG and INI set, cancers are not that important. And even when you talk about cancers, you have to start from cancer cervix, follow it up with cancer ovary, and follow it up by cancer endometrium. That's how you have to approach the cancers. Now इसमें बहुत सारे topics ऐसे हैं जो हमने mention भी नहीं करे. That is why I've said that revision videos all in all are important. You have to read the revision videos, but for a few important topics जिनसे majority of subject के questions बनते हैं, you have to add upon them from QBank, you have to add upon them from PYQs, and you even have to go to main resource if you are facing problem in some of those subjects. For example, अगर मुझे PPH की detailed analysis पता नहीं है, या let alone PPH, infertility is a for example, infertility is a very complex topic. ठीक है, इनफर्टिलिटी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक. इनफर्टिलिटी में प्रॉपर आपको मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, मेल में भी आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर एंड प्री टेस्टिकुलर कौन कौन सी इनफर्टिलिटीज है. तो ये मुझे इवन आफ्टर सेकंड एंड थर्ड रिवीजन आई वाज क्वाइट कंफ्यूज्ड इन इनफर्टिलिटी, एंड आई वाज सीइंग कि ट्रेंड के हिसाब से इनफर्टिलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं. सो फॉर दैट स्पेसिफिक टॉपिक आई रेफर टू मेन वीडियोज टू इनफर्टिलिटी. तो मेन वीडियोस पढ़ने से इनफर्टिलिटी मेरे दिमाग में क्लियर हुई थी, एंड दैट इज हाउ इट हेल्प्ड इन द मेन एग्जाम. तो दैट इज व्हाई यू हैव टू पे वेरी स्पेसिफिक अटेंशन टू दो सब्जेक्ट्स जो आपको पता है कि इन विच यू आर वीक एट. आई वाज वीक एट इनफर्टिलिटी, आई सप्लीमेंटेड विद मेन रिसोर्स. नाउ डर्मेटोलॉजी, ऑल इन ऑल डर्मेटोलॉजी इज अ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैरो आरआर की बात करोगे तो 35 पेजेस के आरआर नोट्स है डर्मेटोलॉजी के, आउट ऑफ विच डर्मेटोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फेक्शंस है. नाउ I'll personally जो मैंने पर्सनली करा था फॉर इन्फेक्शंस के लिए आई रेफर टू मेन वीडियोस, एंड इसके अलावा मैंने पूरी बाकी डर्मा आरआर से करी थी. स्पेसिफिकली फॉर इन्फेक्शंस आई रेफर टू मेन वीडियोस. इन्फेक्शंस में एसटीडीज आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, फॉलोड बाय बैक्टीरियल, पैरासाइट्स एंड वायरल इन्फेक्शंस. बट एसटीडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एसटीडीज गायनी में भी ओवरलैप करेंगी, एसटीडीज डर्मा में भी ओवरलैप करेंगी, एसटीडीज माइक्रो में भी ओवरलैप करती हैं व्हेन यू रीड अबाउट वायरसेस एंड अदर ऑल द. तो इसलिए एसटीडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू प्रॉपरली फोकस अटेंशन ऑन एसटीडीज, और डर्मेटोलॉजिकली तो इंपॉर्टेंट है ही इन्फेक्शंस. सो फॉर इन्फेक्शंस आई सप्लीमेंटेड विद मेन वीडियोस. नाउ कमिंग टू ऑर्थो. ऑर्थो की रिवीजन वीडियोस इन इटसेल्फ इन मैरो, जो मैंने एडिशन 5 की रिवीजन वीडियोस पढ़ी थी, दोज वर अप्रोक्सीमेटली ऑफ 150 पेजेस. इट वाज अ हरक्यूलियन टास्क टू डू ऑर्थो. मुझे 2 से 3 दिन तो सिर्फ ऑर्थो करने में लग जाते थे. तो जब आप ऑर्थो के बारे में पढ़ रहे हो, और लास्ट मैंने जाके ये रियलाइज किया कि ऑर्थो के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ट्यूमर्स से और इन्फेक्शन से आ रहे हैं. सो दिस ट्यूमर्स एंड इन्फेक्शंस आर वन ऑफ द टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ऑर्थो. इफ यू रीडिंग ऑर्थो फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर आप शुरू कर रहे हो मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर से, फिर आप पढ़ते हुए आ रहे हो रीजनल कंडीशंस, और फिर आप पढ़ते हुए आ रहे हो मेनिस्कल इंजरी, ये सब चीजें, और ट्यूमर्स और इन्फेक्शंस पे अगर आप लास्ट में पहुंच रहे हो व्हेन यू आर ऑल बर्नड आउट, दिस इज एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग अप्रोच. व्हेन यू आर रिवाइजिंग स्पेसिफिकली towards late in your preparation, जब आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिविजन कर रहे हो, you have to first revise tumors, then revise infections like osteomyelitis. फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोमाइलाइटिस बहुत सारे होते हैं, गारे और वो सब चीजें. देन फॉलो इट अप बाय मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक रिकेट्स. देन फॉलो इट अप बाय ये स्कर्वी वर्वी जो भी था. देन गो फॉर जॉइंट्स. जॉइंट्स में स्पेसिफिकली नी जॉइंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मेनिस्काइज आते हैं एंड क्रूशिएट्स आते हैं. तो ये वाले टॉपिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन जॉइंट्स. देन फ्रैक्चर्स ऑफ अपर लिम्ब. इफ यू टिपिकली आस्क मी अबाउट फ्रैक्चर्स, व्हिच फ्रैक्चर्स आर इंपॉर्टेंट, अपर लिम्ब फ्रैक्चर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन लोअर लिम्ब फ्रैक्चर्स, विद एन एक्सेप्शन ऑफ फीमर. एवरीथिंग अबाउट फीमर इज इंपॉर्टेंट. I'll even go as far as to say कि फीमर आप एनाटमी से भी पढ़िए. फीमर में कौन सी अटैचमेंट कहाँ पर होती है, और फीमर की बोन कैसे होती है, व्हाट आर द एंगल्स ऑफ फीमर, ठीक है, व्हाट आर द अटैचमेंट्स ऑफ फीमर, ठीक है, व्हाट आर द फ्रैक्चर्स ऑफ फीमर. These are very important. Femur is a bone in itself which is very important. ये ऑर्थो में, एनाट में कहीं पे भी पूछी जा सकती है. नर्व इंजरीज, I personally supplemented my the information on nerves from main videos of anatomy. Not main videos, but I used a book. I used my main anatomy book
विश्राम सिंह, एनाटमी बुक फॉर नर्व्स। तो मैंने नर्व्स स्पेसिफिकली ब्रेकियल प्लेक्सिस और अपर लिम नर्व्स मैंने विश्राम सिंह से पढ़ी थी, और उसी के अंदर इन्होंने इंजरीज भी दी हुई थी, तो मैंने उसी का एक नोट बना के अपने ऑर्थो के नोट्स के साइड में लगा दिया था, विच आई यूज्ड टू रिवाइज इवन विद एनाटमी। तो इसलिए नर्व्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नर्व्स इंजरी से क्वेश्चन ऑर्थो के अंदर घूमता है, और नर्व्स इंजरी से एक ना एक क्वेश्चन नियरली हर बार आता है। दैट इज व्हाई यू हैव टू स्ट्रेंथन योर नर्व्स इन ऑर्थो। Now, second year subject is pathology. Second year subjects are nearly all make and break. For example, pathology is make or break subject. ठीक है, microbiology is a make or break subject. After that, yes, pharmacology is a make or break subject. Forensic medicine is comparatively newer, is comparatively an important subject, but which is very small subject. इसको आप बहुत easily कर सकते हो, and it's quite interesting as well. So coming back to pathology में the most important point in pathology is your general pathology. You cannot progress further in pathology until you master general pathology. अगर आपके पास pathology पढ़ने के लिए किसी एक टॉपिक को पढ़ने का टाइम है, please read general pathology. ठीक है. Second important thing is you have to follow it up with hematology, and then follow it up by systemic pathology, and then immunology. Now systemic pathology is not important all in all. Systemic pathology की अगर आप images कर लो, for example if you're referring to Preeti ma'am's notes, प्रीति मैम के नोट्स में लास्ट 2 वीडियोस आर ऑफ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस. इवन इफ इन सिस्टमिक पैथोलॉजी यू रेफर टू दोस इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, मोर और लेस आपकी सिस्टमिक पैथोलॉजी हो जाएगी. बट फॉर जनरल पैथोलॉजी एंड हेमाटोलॉजी यू शुड नो प्रीति मैम्स नोट्स इन एंड आउट, और एनी नोट्स यू आर फॉलोइंग इन एंड आउट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड हेमाटोलॉजी में WBCs आर एक्चुअली मोर, WBCs फॉलोड बाय RBCs फॉलोड बाय प्लेटलेट्स. These are very important. WBCs and RBCs are nearly equally important, but WBCs are quite confusing, are a little more confusing than RBCs. Then immunology. Now immunology last पे इसलिए आई है, not because immunology is not important, but because immunology माइक्रो में भी है, immunology पैथो में भी है. I'll suggest कि आप इम्यूनोलॉजी किसी एक ही एक चीज से पढ़ो. आई पर्सनली रेड इम्यूनोलॉजी फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सब चीजें माइक्रोबायोलॉजी में एक्स्ट्रा दी थी. तो मैं माइक्रोबायोलॉजी से ही पूरी इम्यूनोलॉजी पढ़ लेता था, तो इसलिए मैं पैथो में नहीं पढ़ता था. दैट इज हाउ यू हैव टू शॉर्टन योर रिसोर्स. अगर इम्यूनोलॉजी 2 बार पढ़ने का कोई फायदा नहीं. यू हैव टू रीड इट वंस, यू हैव टू रीड इट वंस. आई यूज्ड टू रीड इट फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, यू कैन रीड इट फ्रॉम पैथोलॉजी एज वेल. बट इट्स इंपॉर्टेंट कि जनरल पैथोलॉजी और हेमाटोलॉजी इज इंपॉर्टेंट. और दूसरी चीज ये भी है कि नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि पैथोलॉजी में से एग्जैक्टली क्वेश्चंस कहां से आएंगे, जेनेटिक्स से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एपोप्टोसिस नेक्रोसिस से कितने क्वेश्चंस आएंगे. बट इट्स इंपॉर्टेंट कि IBQ, pathology is very highly relying on IBQ. And the another subject is microbiology, another make and break subject. The first thing that you have to do is general micro. General micro में क्या important है? Sterilization is important quite, bacterial growth curve is important, culture media is important, and bacterial genetics is important. But यहाँ पे एक mistake है. Bacteriology is more important than general microbiology. All in all, if you have to follow a sequence, bacteriology should be followed up with parasitology. It should be followed by mycology. It should be followed by general micro. It should be followed by immuno. ठीक है. एंड लास्ट में, यस ऑब्वियसली लास्ट में इट शुड बी फॉलोड बाय वायरोलॉजी, बिकॉज वायरोलॉजी इज अ वेरी हर्क्यूलियन टास्क टू कंप्लीट ऑल ऑफ वायरोलॉजी. बहुत ज्यादा वायरोलॉजी है. सो इफ यू वांट टू प्रॉपरली फिनिश माइक्रोबायोलॉजी, एंड इट विद वायरोलॉजी. अगर आप बहुत भरे दिमाग से भी वायरोलॉजी पढ़ोगे, इवन इफ यू रिमेंबर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वायरोलॉजी, यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम. बट इफ यू फॉरगेट बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इट वुड बी अ प्रॉब्लम. नाउ कमिंग टू फार्माकोलॉजी. नाउ इंपॉर्टेंस की मैंने फार्माकोलॉजी मेन वीडियोस से पढ़ी थी. द मेन रीजन ऑफ डूइंग फार्माकोलॉजी फ्रॉम मेन वीडियोस वाज बिकॉज आई रियलाइज्ड कि मैं मेडिसिन ढंग से नहीं कर पाऊंगा. बिकॉज माय मेडिसिन सब्जेक्ट वाज गोइंग टू बी वीक, आई फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट व्हिच इज इंटीग्रेटिंग मेडिसिन विद फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, एंड दैट इज फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी अगर आप पढ़ते हो, स्पेसिफिकली मैंने मेन वीडियोस गोविंद राय गर्ग सर की मेन वीडियोस से करी थी. यू कैन रेफर टू एनी अदर रिसोर्स. अदरवाइज गोविंद राय गर्ग की सर की मेन वीडियोस आर मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस फार्माकोलॉजी. तो इसलिए मैंने इसको मेन वीडियो से करा था. Whenever you are doing pharmacology, you have to follow a particular sequence. General pharma is always more important, even in INI set, जो अभी मई में आने वाला है. This INI set has just passed. मई में जो INI set आएगा, उसके लिए भी general pharmacology is way more important than any other topic of pharmacology. General pharmacology, if you talk about NEET,
it is followed by ANS, it is followed by antimicrobials, then it is followed by CVS, endocrine and CNS. अब अगर आप CNS में देखोगे, here is a major difference between NEET and INI set. CNS is very important in INI set. अगर फार्माकोलॉजी के 10 क्वेश्चन INI set में आएंगे, out of 10 questions 6 or 7 questions would be of CNS and typical questions which would be very difficult to answer. But in case of NEET, फार्माकोलॉजी में CNS का सबसे कम इंपॉर्टेंस है, least importance is of CNS. Now coming to forensic medicine. Forensic medicine is a growing subject. It is an important subject जिससे कम questions आते हैं, sure short questions आते हैं, but it's very important because it is very easy. तो इसके questions गलत नहीं होने चाहिए. The most important point is toxicology. Toxicology is most important and it's quite big as well. ठीक है. Then types of injuries, abrasions, ठीक है, abrasions हैं, lacerations हैं, abrasions हैं, lacerations हैं, all of this is very important. Thanatology is very important. Thanatology से IBQs आते हैं, image based questions आते हैं. Hanging and drowning, these two types of modes of death is actually very important. Identification में sperms, blood and bone, it's very important. Test which are used for sperms, test which are used for blood और bone की identification कैसे करते हैं, that is also very important in forensic medicine. Now coming to third year subjects. थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स में कोई मेक और ब्रेक सब्जेक्ट इतना ज्यादा नहीं है, मोर और लेस आर माइनर सब्जेक्ट्स. पीएसएम इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट, इट इज कंपैरेटिवली अ वेरी बिग सब्जेक्ट. और पीएसएम में कोई ये नहीं बता सकता कि वेयर टू लोकलाइज फ्रॉम वेयर दे वुड आस्क द क्वेश्चन. ठीक है, पीएसएम में क्वेश्चन कैन बी वेरी हैप्पैजार्ड, पीएसएम में क्वेश्चंस कैन बी वेरी टफ, जिनका यही नहीं पता चलेगा कि पीएसएम में क्वेश्चंस आए कहां से. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि कम्युनिटी मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से. इट्स एपिडेमियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब मदर एंड चाइल्ड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. एपिडेमियोलॉजी मीन्स जो पहले, फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू डू मेन वीडियोज फॉर ओनली एपिडेमियोलॉजी. तो व्हेन आई यूज टू डू, जिसमें सारे वो आते हैं, आरसी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स आते हैं और बाकी आपकी स्टडीज आती हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज आती हैं और ये सब, दैट आई यूज टू डू फ्रॉम मेन वीडियोज. दैट मीन्स आई यूज टू रेफर मेन वीडियोज फॉर इनिशियल 100 pages of notes. उसके अलावा everything I did from revision resource. At this particular time, I would suggest कि community medicine you do from revision resource. ठीक है, and supplement the important topics, epidemiology, mother and child health, and biostats from PYQs and QBank. इसके अलावा follow it up from revision resource more or less. ठीक है, और हाँ, this I have kept at last not because it is very less important, because microbiology आपने पढ़ी है. अगर आप माइक्रोबायोलॉजी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की एपिडेमियोलॉजी मोर और लेस आपके टिप्स पर हो जाती है. प्रीति मैम ने अच्छे से करवाई हुई है. नाउ इफ यू लुक एट ईएनटी में रेफर टू आरआर वीडियोस. Anything that is given in RR videos is somewhat important, but if you look at number of questions किससे ज्यादा ask हैं, तो larynx से ज्यादा questions पूछे गए हैं as compared, after which is followed by oropharynx, which is followed by ear and which is followed by nose. Ear में कुछ specific tests like impedance audiometry, PTA और hearing test जो बाकी के होते हैं, Rinne's और Weber's, ठीक है, Rinne's test and Weber's test. This is actually quite important. बट इसमें कोई ऐसे एक स्पेसिफिक टॉपिक लोकलाइज करना बहुत मुश्किल है कि क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा या इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं. दैट इज व्हाई आई से कि ईएनटी में आरआर करो. नाउ ऑप्थेल्मोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जिसमें मैंने आरआर करी थी एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लोकलाइज कि कौन सी चीज पे ज्यादा ध्यान देना है. आफ्टर थोड़ा सा एफर्ट डालने के बाद मुझे पता चला कि ऑप्थेल्मोलॉजी जो मेन चीज जिससे ऑप्थेल्मोलॉजी से क्वेश्चन आया, दैट इज कैटरैक्ट, फॉलोड बाय ग्लोकोमा, फॉलोड बाय कंजक्टिवा, स्क्विंट and image based questions तो ophthalm important है. Now it is important to note कि even after doing all of these topics, even after doing ophthalmology from revision resource पूरी तरीके से करने के बाद भी you still might face some problems, because problem ये है कि ophthalmology के questions are not predictable. These are actually of very high level. जब भी वो देते हैं तो कभी-कभी बहुत high level के देते हैं या बिल्कुल basic के देते हैं. You don't have to miss out on the questions which everybody is getting right. जो किसी से सही नहीं हो रहा वो आपसे भी सही नहीं हो रहा, it doesn't matter. Now first year subject is anatomy. Now anatomy is a IBQ, heavily image based. ठीक है, and second one it is integrated with other subjects. एनाटमी सोलली अकेले में नहीं पूछा जाता, एनाटमी बाकी सारे सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करके पूछा जाता है. तो व्हेनेवर यू आर रीडिंग अदर सब्जेक्ट्स, जो भी कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसमें अगर कोई एनाटॉमिकल कोरिलेशन आ रहा है, यू हैव टू कीप दैट एनाटॉमिकल कोरिलेशन इन माइंड एंड इट इज अ वेरी हाईली इमेज बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, अगर एंड हिस्टोपैथोलॉजी, यस हिस्टोलॉजी इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट. इस बार नीट पीजी 2 में बहुत सारी हिस्टोलॉजिकल इमेजेस थी. एम्ब्रियोलॉजी इन एनाटमी इज इंपॉर्टेंट. ये आपको एनाटमी से पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज ये आपको किसी और चीज से कोरिलेट इतनी इजीली होगा नहीं, कोई और इतना हिस्टोलॉजी में जाके पढ़ाता नहीं. दैट इज व्हाई एनाटमी हिस्टोलॉजी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. न्यूरल पाथवेज आर इंपॉर्टेंट, बट ये आप फिजियो में भी पढ़ोगे.
इमेज बेस्ड में अगर आप देखोगे तो सीएनएस के सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, इनकी एक अश्विनी सर की वीडियो है, यू कैन रेफर टू अश्विनी सर्स वीडियो। नर्व्स आर इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ऑर्थो कोरिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर उन्हें ऑर्थो में नर्व्स पूछने हैं वो एनाटॉमिकल कोरिलेशन के साथ पूछ सकते हैं। दैट इज वाई मैंने विश्राम सिंह से नर्व्स पढ़ी थी कि अगर वो कोई एक बोनी लैंडमार्क दें या कोई ऐसा लैंडमार्क दें जिनसे वो नर्व्स पूछे तो मैं उसको लोकलाइज कर पाऊँ। ठीक है, जॉइंट्स इज इंपॉर्टेंट एंड फीमर भी मैंने ऑर्थो की कोरिलेशन से पढ़ा था। तो एनाटॉमी को आपको अलग से बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इवन इफ यू आर इंटीग्रेटिंग इट विद आरआर इट इज मोर और लेस ओके। Now coming to biochemistry. Biochemistry is a make or break subject. Biochemistry को छोड़ के जाने का कोई सोच भी नहीं सकता. It's not even advisable to leave biochemistry or be less efficient in biochemistry. Biochemistry में vitamins are making bulk of the topics nowadays. Vitamins are very important in biochemistry, followed by carbohydrates, followed by genetic techniques. This is a new topic comparatively which is growing. इनसे और ज्यादा question आने की उम्मीदें हैं. There is a scope that this genetic techniques would be asked more and more, followed by lipids, followed by proteins. Important is you have to read about glycogen storage disorder. You have to read about lysosomal storage disorders. These are very important and questions are asked from these topics. So you have to be very proficient in these topics. Now physiology, I refer to RR videos of physiology. There is no specific one thing which is important in physiology. Physiology अपने आप में इतने इसलिए important इतनी हो जाती है because इस time पे medicine पे focus करना is very difficult because medicine is quite a vast subject. तो medicine की कमी सिर्फ physiology पूरी करती है. That is why physiology is very important. तो general physiology is important. CVS and CNS is very important. CNS is important because ये आपको neurology से integrate करती है. जो आपने मेडिसिन में न्यूरोलॉजी मिस करी होगी वो आपको सीएनएस की फिजियोलॉजी उससे आपको इंटीग्रेट करेगी. दैट इज व्हाई आई सजेस्ट कि आप फिजियोलॉजी आरआर वीडियो से करो एंड सप्लीमेंट इट बाय पीवाईक्यू. दैट इज डन, ओनली दैट इज डन. So now ending this topic, I would like to point out a few things. I would like to tell you a few things that what should be the basic approach. Basic approach is you are doing RR videos, rapid revision videos for all the subjects, and you're supplementing this RR videos. You are giving grand test. ठीक है, after which your GT score would plateau after some time. ठीक है, yeah, it won't increase. After this, what you have to do is you have to supplement your knowledge. You have to supplement by doing Q banks and main videos of specific topics which are important. Of specific topics which are important. Of specific topics which are important. Now I'm not saying कि आप पहली ही रीड में ये करना शुरू कर दो. It's not feasible कि आप पहली रीड में या दूसरी रीड में ये करना शुरू कर दो. Initially you have to go with the proper flow. Initially you have to go with the proper flow of subject. After you make a mental map, after doing your first revision, after doing your second revision, जब आप अपनी थर्ड फोर्थ रिविजन पर आ जाओ, जब अपने लास्ट के फाइनल रिविजन को अप्रोच करो, तब टॉपिक वाइज पढ़ाई करना शुरू करो. And then try supplementing those specific topics with main videos or with Q banks. या सप्लीमेंटेशन और क्यू बैंक्स तो आप फर्स्ट सेकंड रीडिंग के बाद भी कर सकते हो क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है. बट टॉपिक वाइज रीड करना अगर आप पहली दूसरी रिवीजन शुरू कर दोगे इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट क्योंकि आपके पास एक मेंटल मैप नहीं है. यूज फर्स्ट टू रिविजन टू मेक अ मेंटल मैप एंड देन add upon the information from the main videos. Thank you.